Good evening, students. Welcome back here with the social science, and we have to start very first chapter today, that is Earth in the solar system. This is very first chapter from geography, right? Hi Anjali, good evening. Hi Ayush. So all students are on time here, right? I told you about 4:30, 4:35, right? ठीक है, very good. We have Lavanya here. We have Aarti Singh. Hi Aarti. दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, इससे पहले सोशल साइंस की कोई भी क्लास नहीं हुई थी. सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्लास एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश चैप्टर. सो फ्रॉम हियर नाउ आयुष, अंजलि, आरती, यू विल बी हैविंग ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. ठीक है ना, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा. ठीक, और बताते जाइएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट, if I'm explaining any concept and you are having any doubt, so you can just ask me over that live chat. ठीक है ना. I'm fine Anjali, thank you so much for asking me that how am I. I'm good there. Okay, shall we start with the chapter? We have all students connected here. ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब. So we have a first chapter here, Earth in the solar system, which is of very first chapter social science and geography part, right? Now, so what is solar system? First of all, I want to ask you all that what is solar system here? So solar system means we have sun, we have planets, we have stars, we have different galaxies, we have celestial bodies, right? So all of these are constituting a solar system there. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में भी आप देख सकते हो, you have sun, you have planets revolving around the sun, you have this Milky Way. ठीक है ना, you have Milky Way here. So all these are actually constituting the solar system, right? We have how many planets total? We have how many planets in total? बताइए कितने planets हैं total? Do you remember the number? कितने planets हैं? That's 8. Earlier that was 9. ठीक है, including Pluto. There were 9 planets earlier, but now Pluto is a dwarf planet. From now, Pluto is a dwarf planet, so it has been removed from the category of planet. ठीक है, तो अब वो planet नहीं रह गया है. It is a dwarf planet from now. So we have here 8 planets in total. And on which planet we live? हम किस planet पे रहते हैं? On which planet we live? जल्दी से बताइए. That's right Anjali, that's Earth. That's Earth. So yes, Pluto is not here. Actually distance between Sun and Pluto has been increased a lot. That's why it has been kept out of the category of planet. ठीक है ना, उसकी जो डिस्टेंस है ना वो सन से बहुत दूर हो चुकी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत दूर है बेचारा. ठीक है, तब इतनी दूर रहेगा तो बाकी फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट करेगा. So we have a family in the solar system, right? We have sun and 8 planets now. And if Pluto don't wanna come to the family, ठीक है, अगर नहीं आना चाहता है फैमिली में तो उसको फैमिली से बाहर कर दिया. It's not a planet now, it's a dwarf planet now. ठीक है? Okay, so we live on the earth, right? And which color is earth considered? ठीक है, किस कलर से earth consider होती है? Any other name by the color? Any other name? Yes, that's right, that's blue. Why it is considered as blue planet? कोई बता सकता है why Earth is considered as blue planet? Because of water. That water is present here as 71% part. That is right Shreyansh, very good. Due to presence of water, Earth is considered as blue planet, and due to presence of these trees, right?
the trees and vegetation, it is considered also as the green planet, but हम उसे blue planet ज़्यादा consider करेंगे rather than green planet, ठीक है ना. green planet हम दूसरे को बोलते हैं, किसी दूसरे planet को बोलते हैं, and that is actually Venus, ठीक है. तो हम green planet उसे कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं, right, due to greenhouse effect. Yes Mantisha, what do you want to ask? Mantisha, try to skip from this class which is going on and try to rejoin the class, ठीक है. क्लास rejoin करने की कोशिश कीजिए मंतिशा, ठीक है. एक बार बैक कीजिए, go to the application again and then restart the class, ठीक. इसे प्लीज रीस्टार्ट कीजिए so that you will be able to join the class, ठीक है ना. Okay, now we have other planets as well and we will be discussing each and every planet, each of the 8 planets. About we have to just sum up all the important facts that are of these planets, ठीक है ना. हम इन planets के बारे में अलग अलग facts discuss करेंगे, ठीक है ना. चलिए देखते हैं, पहला हम देखते हैं what are celestial bodies here. So first we are starting with some definitions, right. We have to just understand what are celestial bodies, what are stars, what is universe, what is galaxy, what are planets, right. We have to start with some small definitions. Once we come to understand what these terminologies are indicating, then only you will गेट एवरीथिंग, ठीक है ना. एक बारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई दैट स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना. तो यहाँ पर है सेलेस्टियल बॉडीज. नाउ द सन, मून एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है. सन, मून और इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स विच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, दे आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. नाउ दे आर वेरी बिग इन साइज एंड द टेम्परेचर इज वेरी हाई. सो sun has its own light, right? Sun has its own light, ठीक है ना. सन की अपनी लाइट होती है. Now tell me if planets are having their own light. Is this true? Yes, that's right Anjali, that's what it is written here. The sun, moon and other objects which are shining in the night sky are known as celestial bodies. Now we have sun, moon, the planets, the stars. All of these are celestial bodies actually, ठीक है ना. अभी हम देखेंगे celestial bodies में क्या क्या include होगा. We will be seeing a list there, ठीक है. पहले ये बताइए, if sun has its own light, so if this statement is written for the planets, ठीक है, अगर हम ये statement planets के लिए लिखते हैं, so is this statement true here? Planets are having their own light or not? Are the planets having their own light? क्या प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट होती है क्या? बिल्कुल नहीं. दैट्स राइट श्रेयांश वर्मा, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. प्लैनेट्स आर नॉट हैविंग देयर ओन लाइट, दैट इज करेक्ट. आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है. जो जो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है मैं आपको बताती जाऊंगी. ओनली दोज फैक्ट्स यू हैव टू नोट डाउन. Rest of the things are these definitions and other things are actually mentioned in your book, ठीक है. आपकी नोट, आपकी जो preferred book है ना, text book, there only you have given all the definitions, but I will add some other facts, ठीक है. तो वो जो सारे facts मैं नए वाले ऐड करूँगी, that you have to write. मैं बता दूँगी आपको क्या लिखना है, ठीक है. Okay. Now you have planets here and planets are not having their own light. Planets के पास खुद की लाइट नहीं होती है. They receive light from sun. They receive light from sun, right? So planets are shining. If planets are having light, so that's not their own light, it is being obtained from the sun, which is ultimate source of energy, ठीक है ना. चलिए हम देखते हैं next. We have these celestial bodies here. First is stars, next is planets, next are satellites, we have meteors and meteorites, we have asteroids, we have comets, we have galaxies. हमें इन सब टर्म्स की डेफिनेशन अभी पढ़नी है आगे,
ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए. पुट हेडिंग सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज एंड 1 2 3 नंबर डालकर आप ये 7 जो टर्म्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए. नोट डाउन दीज 7 टर्म्स. You don't have to draw picture, right? You have to just write 1 planet, 2 stars, 3 satellites, 4 comets. Just you have to write this number by number. ठीक है, इसे लिखिए प्लीज जल्दी से. Then we will be moving with 1 definitions. Have you noted that down? सबने नोट कर लिया है यहाँ पर? Okay, very good all of you. Now we have stars as first, right? So let me clear you that sun is a star, right? Because stars are having their own light and heat energy. ठीक है, स्टार्स का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. दे आर हैविंग अ हाई टेम्परेचर, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज हॉट बॉडीज. ठीक है, और साइज में कैसे होते हैं? वो साइज में बड़े भी होते हैं स्टार्स. ठीक है, सो दीज स्टार्स आर हैविंग देयर ओन हीट, दैट्स वाई दे इमिट लाइट. उनकी खुद की लाइट एनर्जी होती है. ठीक है, तो विद दिस फैक्ट दिस सन इज अ स्टार. ये सन क्या है? स्टार है. ठीक है, which have their own heat and light, so they emit energy in large amounts. Now sun is a star. Please note down this fact. The sun is a star. Please note down this fact. The sun is a star. So why the sun is a star? Because sun is having its own light and heat. ठीक है, सन के पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर स्टार कह रहे हैं. ठीक है, हैव यू नोटेड दैट डाउन? सबका हो गया है क्लियर? यस, सन इज अ बिगेस्ट स्टार. ओके, इन साइज एज वेल एज इन द टेम्परेचर. ठीक है, दोनों की तरफ से ही ये है. एंड सन इज हैविंग अ लार्ज टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस ओवर इट्स सरफेस. सन की सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है. कैन यू इमेजिन? वी ओनली लिव विथ 35-42 डिग्री सेल्सियस, राइट? इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है इन दी समर, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ टेम्परेचर ऑफ 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड देयर इज 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सच अ हाई टेम्परेचर ओवर सन सर्फेस. कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा, है ना? इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट. ठीक है, इसलिए सन क्या है? सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, सबसे ज़्यादा हीट वाला जो है वो सोर्स है. एंड इट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, नेचुरल सोर्स है ये. ओके, वी हैव नाउ नेक्स्ट heading as constellations. So now various patterns are formed by these stars. We have different number of stars here, many number of stars.
ठीक है ना, बहुत सारे स्टार्स हैं और वो सारे स्टार्स क्या करते हैं, दे आर मेकिंग अ पैटर्न। तो अगर वो एक पैटर्न बना रहे हैं, सो दैट पैटर्न इज प्रेफर्ड, इज टर्म्ड एज कॉन्स्टलेशंस। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट कॉन्स्टलेशन इन दिस। दिस इज अ पिक्चर टेकन बाय नासा। नासा समझते हो आप, वेयर इज नासा? नासा अमेरिका, अमेरिका की क्या है, स्पेस एजेंसी है। सो दिस इज स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, दैट इज नासा. It has here the Capricorn, here the Sagittarius, here Scorpius, here we have Libra, right? Here we have Aquila. So these are the constellations which are just pointed out by pointing and by joining these stars which are shining more than others. ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं ये स्टार्स which are more shinier than others. ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? मंतिशा, वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। मंतिशा, आप कोशिश कीजिए एक बार वीडियो ऐप को स्किप करके उसके बाद फिर से रीजॉइन करके कोशिश कीजिए, दैट वीडियो विल बी स्टार्टेड। ठीक है, आप अभी स्टार्ट नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, अगर वो स्टार्ट नहीं भी हो रहा है, सो दिस वीडियो इज एक्चुअली बीइंग रिकॉर्डेड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में वीडियो लाइव चलने के बाद वहीं पे स्टोर हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा टाइम मिल के देख सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप इसको दोबारा एक बार देख सकते हो। ठीक है मंतिशा, परेशान मत होइए, ट्राई टू ज्वाइन लाइव। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन लाइव देन यू कैन गो टू द रिकॉर्डेड सेक्शन आफ्टर दिस क्लास बीइंग स्टॉप। दिस क्लास के बाद आपका सेशन जैसे ही खत्म होगा, आफ्टर दैट यू कैन गो देयर एंड एक्सेस योर क्लास। ठीक है, ओके। सो दीज आर द कॉन्स्टलेशंस, राइट। आपने ये पढ़ा है कि कुछ राशियों के नाम होते हैं, कभी सुना है आपने? कभी सुना है राशि वर्ड सुना है कि राशियों के बहुत सारे नाम होते हैं? Yes, Anjali. There we have full form of NASA. Please note it down. Very good, Anjali, for sharing this fact with us. Yes, full form of NASA is National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics and Space Agency. दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, लेट मी चेक दिस वंस। ठीक है, एक बार मुझे इसे चेक करने दीजिए इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू नोट दिस डाउन, इसे नोट कर लीजिए एक बार आप। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उर्सा मेजर एंड बिग बियर। जो आप राशियों के नाम सुनते हो ना, वो राशियों के नाम इसी कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड हैं। अकॉर्डिंग टू अवर एंशियंट इंडियन कल्चर, the name of those rashis are based on these constellations itself. जैसे आपने सुना होगा सिकेरिटस, स्कॉर्पियस, कैप्रिकॉर्न, इस तरीके की राशि होती है। कैंसर एक राशि होती है। ठीक है, सो वो जो नाम है ना, वो इन्हीं कॉन्स्टलेशंस पे बेस्ड हैं, राइट। द कॉन्स्टलेशंस विच आर द पैटर्न मेड बाय डिफरेंट स्टार्स। ठीक है, तो एक बार इसे कीजिए। आई एम जस्ट चेकिंग फॉर फुल फॉर्म ऑफ नासा वंस। Yes, that's right. National Aeronautics and Space Administration. Very good. You shared a good fact here. And sorry for writing this agency. We have here administration, right? Okay, note this down as well. इसे भी नोट कर लीजिए आप। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
नोट डाउन दिस फैक्ट एज वेल। बच्चे आपकी नोटबुक ऐसे चेक नहीं होगी, ठीक है, ये नोटबुक आपकी इनडायरेक्टली चेक होगी। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे मैं कोई होमवर्क देती हूँ ना, सो यू हैव टू क्लिक दी फोटो, क्लिक दैट होमवर्क एंड हैव टू पोस्ट ओवर दैट पोर्टल, ठीक है, अपने पोर्टल पर से पोस्ट करना पड़ेगा, तो वो बस मैं चेक करूँगी, नोटबुक आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पुट डाउन बोल्ड पॉइंट्स। कुछ चीज़ें मैं नोट करने बोलती हूँ ना, तो उसको नोट कर लेना, ठीक है, और जब टेस्ट होगा ना तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नोटबुक आपकी चेक नहीं होती है, आपको एक बार इसे नोट करना है और फिर आपको एक बार रिवाइज करना है फॉर द टेस्ट। जैसे इस संडे को आपका टेस्ट रहेगा ना, तो ये वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। एक बार फाइनली मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। पोर्टल यानी कि जैसे आपका ऐप है ना जिसपे आप क्लास देख रहे हो, आपका एक ऐप है और आपकी वेबसाइट भी है rankupclasses.com करके, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे आप अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन पे भी आप लॉगिन करके वहाँ पे भी होमवर्क भेज सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ ना, मैथ्स में दिया था बस मैंने, यहाँ पर तो नहीं दिया है होमवर्क, है ना, ठीक है। Now we have here galaxy. So galaxy is huge collection of billions of stars, clouds and dust and gases. So please note down this definition. Galaxy is a huge collection of billions of stars, dust and clouds of gases. Now we have million galaxies present in our universe and we lie in the Milky Way galaxy. Our Earth planet lies in the Milky Way galaxy. So please note down this fact as well. Now sun, earth and planet all are bound together with a gravitational pull, right? जैसे हमारे अर्थ पे ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी का क्या मतलब है, जैसे वी आर स्टिक टू द अर्थ सरफेस, हम चलते हैं, हम दौड़ पाते हैं, है ना, चीज़ें जैसे मैं अगर ये इससे ऊपर फेंकूंगी तो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ के पास ग्रेविटी है, इसीलिए सारी चीज़ें लौटकर वापस आ जाती हैं, ठीक है, विद इन अ रेंज, एक रेंज में क्या होती है, सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, ठीक है ये बात। तो इसी तरीके से जो सन है, अर्थ है एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर बाउंड टुगेदर बाय दैट ग्रेविटेशनल पुल, राइट, ठीक है। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस फैक्ट एंड दिस डेफिनेशन। Galaxy is a huge collection of billions of stars and clouds of dust and gases. Earth and all other planets lie in a Milky Way galaxy. So ये आपको multiple choice question में पूछा जा सकता है that in which galaxy Earth lie? In which galaxy Earth lie? So Earth lies in Milky Way galaxy. क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? किसी को भी अभी तक डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड। नाउ वी हैव next here is the planets. So planets are the celestial bodies that are not having their own heat and light. Now from which source planets are receiving heat and lights? So planets receive heat and light from sun, right? They receive heat and light from sun. Now this planet word comes from the Greek word that is planetai, which means wanderers. Wanderers means they are just moving all and around, they are revolving all around. So all planets are revolving around the sun as well as they are rotating on their axis, ठीक है। दो बातें होती हैं, one is revolution and one thing is rotation, right? So one thing is revolution and one thing is rotation. Now the revolution is around the sun. If
Earth is revolving around the sun, it means that it is revolving, it is completing one revolution. So what is the time taken by Earth to complete one revolution? Anyone knows this fact? What is the time taken by Earth by revolving around the sun? कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में अर्थ को सन के अराउंड? Approximately 1 year, but this should be written as 365 days, right? Yes, this is 1 year or all around 365 days. This is not actually 365 days. There are some hours left, right? Approximately this is 6 hours. So 365 days and 6 hours are taken by Earth to complete one revolution. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि लीप ईयर आता है. सो इन हाउ मैनी ईयर्स लीप ईयर्स कम्स? कोई जानता है? एनीवन? By how many years leap years come? Not 5 years, this is 4 years. Right, this is 4 years. हर 4 साल में एक बार क्या आता है? लीप ईयर. What do you mean by leap year? So leap year means that an year which is consisting of 366 days. A year with 366 days. Now this 6 hours for the 4 years will be making 24 hours, and that 24 hour will be added as the 366th day of the leap year. ये बात आपको समझ में आई? So in every 4 years there is leap year. Every 4th year is the leap year. So what do you mean by leap year? This is 366 days. If this Earth is revolving around the sun in 365 days and 6 hours, so these 6 hours for the 4 years will be added, and that will be equal to 24 hours, right? Now what is this 24 hours? So one day consists of 24 hours. 24 hours make a day. So that's why every 4th year you are experiencing a next day, 366th day, that is leap year. ठीक है ये बात समझ में आई सबको? ये मैंने क्या कैलकुलेट किया? Is this clear to everyone? How this leap year comes here? Clear हुआ ये बात? ये कोई नई चीज थी जो आपने पढ़ी थी या पहले भी पढ़ा हुआ था? ओके अंजलि, this is 365 days and 6 hours which are taken by Earth to complete one revolution around the sun. ठीक है, सन के अराउंड अर्थ को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, दिस इज अर्थ. Where is Earth? This is Earth. So if Earth is revolving around the sun, so इस एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours. Right? Now we experience leap year every 4th year. Right? So every 4th year we are experiencing a leap year. Leap year means 366 days. Now we are having 365 days within an year. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days होते हैं. This is 366th day. Now this one day is added. This one day is added because of this 6 hours. तो ये 6 hours कब add हुए? 4 साल में add हुए. So this is equal to 24 hours. Now this 24 hours are making a day. ठीक है, ये 24 hours ही क्या है? डे बना रहे हैं. अभी क्लियर हुआ आयुष और अंजलि? आयुष और अंजलि अभी क्लियर हुआ? गुड, वेरी गुड अंजलि. नाउ इट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके आयुष, ये समझ में आया मैंने क्या बताया अभी?
आयुष राज, क्लियर हुआ? वेरी गुड. नाउ we have two terms here, revolution and rotation. Now rotation is, what is rotation here? So rotation is actually spinning of earth on its own axis. Now if earth is just spinning over that axis, ठीक है, इस तरीके से अगर वो अपनी ही स्पिन पे, अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. ठीक है ना? मतलब कैसा मैं कैसा कहना चाह रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट वी हैव अर्थ हियर, इट इज रिवॉल्विंग एज वेल एज रोटेटिंग. ये अपने आप में भी ऐसे गोल 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 घूम रही है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रोटेशन, राइट? इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन? कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में? जल्दी से बताओ. एनीवन who knows that what time is taken by earth to complete one rotation? एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? Yes, this is 24 hours, right? So this is 24 hours which are taken by earth to complete one rotation. Now because of this rotation, day and night happens. ठीक है ना? Because of rotation, because of revolution, we experience different seasons. Because of revolution, we experience different seasons come. Right? Basically there are major form there are 3 seasons, right? This is rain, summer and cold. And in if we bifurcate them, so we are having 6 seasons in total. ठीक है, वैसे 6 सीजन होते हैं, 3 मंथ्स के हम एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, 2 मंथ्स के. राइट, क्लियर हुआ ये बात? ठीक है ना? सो दिस इज रोटेशन. And to complete one rotation, Earth takes 24 hours, and to complete one revolution, Earth takes 365 days and 6 hours. Now, every 4th year, we experience leap year because of this additional 6 hours. So, 6 hours for 4 years are constituting up to 24 hours, and that 24 hours is making a day. Clear हुई इतनी बातें सबको? ठीक है? Now, we have next definition of the solar system. So, in solar system, we have sun, 8 planets, satellites and some celestial bodies. Now, do you know this, that what is natural satellite of Earth? Name natural satellite of the Earth. Earth का natural satellite बताएगा कोई? Yes, Anjali, that's right. Natural satellite of Earth is moon, right? Okay, fine. Now please try to note this down. Try to note this revolution and this time and rotation with this one. ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए प्लीज. पहले आप ये नोट कर लीजिए. Due to rotation, day and night happens. Due to revolution, different seasons come. रोटेशन के बाद लिख लीजिएगा 24 hours और रिवॉल्यूशन के बाद लिख लीजिएगा 365 days and 6 hours. ठीक है, ये फैक्ट नोट कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. एंड व्हेन वी विल बी सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर दीज फैक्ट्स विल कम देयर. ठीक है ना, वहां पे आएंगे ये फैक्ट्स. Good, Anjali. You are done with the writing? Okay.
Now next we are moving towards actually the solar system. Now one by one we will be studying about different कंपोनेंट्स ऑफ दैट सोलर सिस्टम. ठीक है, हम सोलर सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें हैं, वी विल रीड अबाउट सन, वी विल रीड अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, एंड देन वी विल रीड अबाउट द सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइट्स. ठीक है ना, तो हम ये धीरे धीरे करके पढ़ेंगे आगे. Now these are the differences between asteroids, comets, meteorites and meteors. ठीक है, ये आपको सब एक जैसे दिख रहे होंगे, बट हम आगे जाके धीरे धीरे जब इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सो यू विल फाइंड अ डिफरेंस देन. ठीक है, तब आपको सारे डिफरेंस धीरे धीरे पता चलेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सन. So sun is the center of solar system. You all know this very well that sun is center of the solar system. All planets are revolving around the sun. All asteroids are even revolving around the sun. सारी celestial bodies जो हैं वो sun के around क्या कर रही हैं, revolve कर रही हैं. Now this is huge and made up of extremely hot gases. So there are many hot gases over the sun surface which make it extremely hot and rise the temperature up to 6000 degree Celsius. तो 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसके सरफेस पे, सन के सरफेस पे. ठीक है, नाउ दिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. ठीक है ना, एंड ऑल्सो द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. सो प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट. इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए जल्दी से. The sun is about 150 million kilometers away from earth. This is the distance between sun and earth. ठीक है, अगर मान लें कि सन जो है वो 150 किलोमीटर्स अवे है, it means that this is the indication of distance between sun and earth. ठीक है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है ये 150 मिलियन किलोमीटर्स. ठीक है, वेरी गुड. नाउ वी हैव नेक्स्ट हियर विद द प्लैनेट्स. नाउ प्लैनेट्स आर 8 in numbers in order of the distance from the sun. This is sun, right? This is sun and all planets are just in an order. ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर में है. सो वॉट इज द डिस्टेंस, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. सो एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द सन, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना प्लैनेट्स का सन से, सो दे आर बिकमिंग कोल्ड. सो सबसे पहले कौन सा आता है प्लैनेट, दिस इज मर्क्यूरी, राइट? दिस इज मर्क्यूरी. दैट्स व्हाई दिस इज हॉटेस्ट प्लैनेट. ये मर्क्यूरी क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है. व्हाई? बिकॉज दिस इज नियर टू द सन. This is having less distance than the other planets to the sun. ठीक है, दूसरे planet से अगर हम compare करें, so this Mercury is very near to sun. Now this is hottest planet. हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. तो Mercury क्या है, hottest planet है, and it takes about 88 days to 90 days to complete one revolution around the sun. तो ये कितना टाइम लेता है, 88 से 90 डेज लेता है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. प्रेफरेबली दिस इज 88 डेज, राइट? सो मर्क्यूरी टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. क्लियर हुआ? नाउ वी हैव नेक्स्ट प्लैनेट एज वीनस, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रीन प्लैनेट. वाई ग्रीन प्लैनेट? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. In detail we will study about this, right? So we will study about the greenhouse effect and we will also understand then why Venus is considered as green planet. इसे हम green planet क्यों कहते हैं, है ना? अर्थ को हम blue planet कहते हैं. क्यों कहते हैं? Because the presence of water. Water की presence के कारण the earth is covered with 71% of water, right?
So if Earth is covered with 71% of water, it means that it is considered as the blue planet. Now ये Venus green planet क्यों है? Because of this greenhouse effect. Now what is greenhouse effect? We will discuss this in the next class. ठीक है, ये हम next में discuss करेंगे. Now as the third planet, we are having Earth here. So this is the planet over which we live, right? And Earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution. ठीक है ना? Now this Earth is considered as blue planet because of the presence of water. Earth के बारे में हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी. ठीक है. Next planet is Mars. So Mars is considered red planet. Mars को हम क्या कहते हैं? Red planet कहते हैं. ठीक है. Then we have Jupiter. So Jupiter is biggest planet. Then we have Saturn. The Saturn is considered yellowish planet. इसे हम कैसा planet कहते हैं? Yellowish planet. Due to gases present around the Saturn. ठीक है, Saturn की surface पे बहुत सारी ऐसी gases हैं जो हमेशा shine करती रहती हैं. That's why this is considered as Saturn. अच्छा ये बताओ कि there are rings present around the planet. So which are two planets around them the rings are present? ऐसे दो planets बताइए जिनके आगे पीछे rings होते हैं, rings जिनके all around there are rings present. Yes Ayush, that is 71% water and 29% land, right? चलो जल्दी से बताओ ये. Name two planets which are having rings around them. Rings होते हैं उनके आसपास. Yes, one is Saturn, another is. Now Pluto is not a planet, na? Pluto is not a planet. What about Uranus and Neptune? Are there any rings present around Uranus and Neptune? बताइए जल्दी से. Yes, that's right Shreyas, that is Uranus. Now we have two planets here, Saturn and Uranus, around which rings are present. Pluto is no more a planet. Pluto a planet नहीं है, right? So in the path, if they are revolving around the sun, so they are revolving around the sun, and this path in which they are revolving around the sun is known as orbit. ठीक है, इस path को हम क्या कहते हैं? Orbit कहते हैं. They are fixed elliptical path. ये elliptical form में है. ठीक है, they are ellipse in the shape. So all the planets are revolving around the sun in the elliptical path that is known as orbit. ठीक है, ये बात यहाँ तक चीजें क्लियर हुई. नाउ प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट. नोट डाउन द नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड नेम ऑफ द प्लैनेट्स. प्लीज नोट डाउन दिस. ऑल्सो नोट डाउन दिस फैक्ट. दे मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट. Now why it is considered hottest, why it is green, why it is red, why it is biggest, these are the facts which we will discuss in the next class. ठीक है, हम next class में देखेंगे. Yes Shreyash, because Neptune is the last planet in the order of distance, so this is coldest planet. This is farthest from the sun. ठीक है, सन से सबसे दूर वाले डिस्टेंस पे है ये नेपच्यून, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? कोल्डेस्ट प्लैनेट. This Neptune is actually coldest planet, right? Okay, very good. Now we will sum up all the facts in the next class of the planets. ठीक है ना? तब तक आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए, so that we will be solving some 5 to 6 questions now. कुछ 5-6 questions solve करते हैं हम. Please पहले इन्हें नोट डाउन कर लीजिए. In next class we will be detailing this chapter. We will be लर्निंग अबाउट द प्लैनेट्स इन डिटेल. ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे प्लैनेट्स क्या है, इनके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे हम विद द रीजंस. ठीक है, इसे नोट करते ही मुझे बता दीजिएगा. यू हैव टू नोट डाउन दिस सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट. यू हैव टू नोट डाउन दीज 2 पॉइंट्स.
And after noting this down, we will be solving some 5 to 6 questions. Okay, Anjali is done with this. Good, Anjali. Okay, Shreyansh, very good. Now we are moving towards the question part first. So this is very first question on your screen. Which is the brightest planet in the universe? Which is the brightest planet in the universe? Choose the option Mercury, Venus, Earth, Saturn. Choose option out of these four: Mercury, Venus, Earth or Saturn. I am not talking about hottest planet, I am talking about brightest planet. Brightest के बारे में पूछा है मैंने. All are wrong here. This is Venus. This is Venus, and in the next class I will be telling you why this is considered as the brightest planet. ठीक है? This is option number B. Very good, Anjali. This is option number B. This is Venus. Now answer the second question. फटाफट solve कीजिए ये. Which is the nearest planet to the sun? ये तो बन जाएगा आपसे. Yes, we have answer from Anjali. We have answer from Shreyansh. That is option number C. Very good. Anyone else? बाकी लोग भी आंसर कीजिए. मंतिशा, आरती, try to answer. Yes, that's right. That's Mercury. That is option number C. This is Mercury, which is nearest planet to the sun. Just first planet is Mercury, right? ठीक है? Okay. Now we have third question here. On which planet the life exists? किस planet पे life है? ये तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है. जल्दी से बताओ इसका आंसर. Yes, we have answer from Ayush, Anjali. Right. Very good. This is option number A. This is Earth. Good, Shreyansh. This is Earth, which is the planet having life. We live on the Earth planet, right? Now, we have fourth question. Which planet appears to be yellowish? Yellowish planet. Just I told you recently. मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था कि हम yellowish planet किसे कहते हैं. Okay, Anjali is going for option number B. Fine. Anyone else? कोई और try करना चाहेगा? Okay, you are now switching to C. Okay. Anyone else? Yes, Aarti, you are right. That is Saturn. That is Saturn. Option number D. I told you, due to the presence of gases, it always appears brighter and shiner. ठीक है? Okay. This is option number D, Saturn. This is not Uranus. This is Saturn. ठीक है? Clear हुआ? Now we are moving towards next question. Which is the farthest planet of solar system? Farthest planet of solar system. Okay. Anjali is going with option number A. That is Neptune. Anyone else? Okay. Apurv is also going for Neptune. Apurv, अचानक से आप appear हुए हो यहाँ पर. अभी तक की चीजें समझ में आई है ना? आप बता नहीं रहे थे एक भी क्वेश्चन के आंसर अभी तक. Okay, that's right. This is Neptune. Neptune is farthest planet of the solar system. This is very far away, distinct to the sun. ठीक है, बहुत दूर है ये सन से. Now we have the first outside orbit of the Earth planet. Now which planet comes after Earth? Out of the Earth. Anjali is going for option number B. Okay, anyone else? कोई और?
Yes, Anjali, I stood that. This is Mars. Okay. And anyone else? Yes, this is Shreyansh Apurv going with Mars. That's right. Very good. आज अच्छे समझा ये चैप्टर है ना, आज सही आंसर कर रहे हो अब इसमें. साइंस में तो सारे गलत कर रहे थे आप लोग. ठीक है, वेरी गुड. सो फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, it means that after earth which planet appears first? So this is Mars. ठीक है, Mars पहला planet है अर्थ के बाद. Now this is second, next question, which is the largest planet in solar system? कौन सा होगा largest planet यहाँ पर? Okay, everyone is going for C. Very good. Yes, this is Jupiter. This is the largest planet. ठीक है, वेरी गुड. अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए आज की क्लास में. हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. साइंस भी ऐसे ही करना, एक बार पढ़ लेना साइंस फिर से. ठीक है, बहुत गलत आंसर दे रहे थे आज सब लोग. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव व्हाट इज द गैप बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड. नाउ वी हैव नॉट रेड अबाउट दिस फैक्ट. ठीक है, अभी हमने ये फैक्ट नहीं पढ़ा, इसको यहीं पे छोड़ दो. और ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 10, ये फैक्ट भी अभी हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, टेल मी अबाउट दिस फैक्ट. द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. 10th का आंसर बताओ आप. टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. Okay, going for option number A, B, A, and some are going. Okay, so this is actually change of the days, right? The tilting of the earth is responsible for change of the days. ठीक है, change of the days. ठीक है, this is option number A. So hence we are completed with the session. Now in the next class we will be moving towards ahead of this. ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक, क्लियर हुआ? आई विल लेट यू नोट डाउन ऑल दी फैक्ट्स. मैं आगे आपको प्लैनेट्स पढ़ाने वाली हूँ. प्लैनेट्स में हम अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आप उसे क्लियर रखना. ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच.